मॉडुलर टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन लास्ट क्लास का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते थे। गिवन है z is equal to x plus iota y, z power 1 by 3 is equal to a minus iota b and x by a minus y by b is equal to lambda times a square minus b square। तो आपको लैम्डा का वैल्यू बताना है। आपको बताना है कि x z जो है वो x प्लस आयोटा y है एंड z के पावर 1/3 इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b है। तो आपको x बाई a माइनस y बाई b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको लैम्डा का वैल्यू बताना है। ऑप्शन में ले लेता हूँ 1 4 1/4 -4। You can do or I need to discuss? Samita, you can try. Aditi, okay, let's try. Aditi, are you doing? मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा, देखिए x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। सो एक कॉन्सेप्ट है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा इफ रियल पार्ट इक्वल होगा, मतलब x इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, तभी पॉसिबल है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, एक आपको दिया हुआ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y और z के पावर 1/3, तो यहाँ से भी आप क्या निकाल लेंगे z का वैल्यू। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। z के पावर 1/3 इज इक्वल टू गिवन है a माइनस आयोटा b, तो क्यूब बोथ साइड कर देते, तो z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b का क्यूब। क्लियर है? तो अब इसका एक क्यूब फाइंड कर लीजिए। बेसिकली एक क्यूब माइनस, बताइए, एक क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आयोटा b आयोटा a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a लगा दीजिए, b आयोटा माइनस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब और आयोटा होगा। क्लियर है? क्लियर है? एक क्यूब, आप बताइए z इज इक्वल टू क्या है, एक क्यूब प्लस, आप रियल पार्ट को एक बार एक साथ ले लीजिए, एक क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए माइनस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब एंड z क्या गिवन है, x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर
plus iota 3 minus 3 square b plus b. Now it means कि x is equal to क्या होगा, aq minus 3ab square and y is equal to we can say minus 3a square b plus bq. Now we need to find x by a and y by b because इसका पूछा गया आपसे value. So x by a it means कि आप x by a से divide कर दिए, so get a square minus 3 b square, clear है. Now y by b is equal to minus 3a square plus b square. So now x by a minus y by b is equal to a square minus 3b square minus 3a square plus b square. So get 4a square minus 4b square. So take common 4a square minus b square. So if you compare, then lambda is basically 4. So B option is correct. देख लीजिए आप. Fill it out, you can ask. Clear है? Concept is कि if two complex number equal होगा only if real part के equal होगा and imaginary part के. X equal to a and y equal to b, like x plus iota y equal to a plus iota b. Aditi, any doubt? Aditi? Savita, any doubt? Okay. So see the modulus topic, new topic, that is modulus. So know how to find the modulus. Let z is equal to x plus iota y. So we can plot now x plus iota y in the coordinate system, Cartesian coordinates. So let be the point that is x comma y, right? So you can see this is the x distance, this is the y distance. So basically, this is center. So OP is the R, that is mod of Z is equal to root under Pythagoras theorem apply करेंगे आप. So get x square plus y square का root under. So basically modulus is a mod of Z, that is root under x square plus y square. आपका A होता है modulus. It means कि आप बोल सकते हैं कि real part of Z का square plus imaginary part of Z का square का sum. Mod of Z is basically real part of Z का square plus imaginary part का square. So this is the basically OP, right? OP is also. So now find the modulus of question is find the modulus of Z if first is Z is equal to 3 plus 4 iota. Second is Z is equal to minus 4 minus 3 iota. Third is 7 iota. 4 is 5. पहला का आंसर कितना हो जाएगा सविता? Mod of Z is equal to root under 3 square plus 4 square, that is 5. Second का also mod of Z is equal to root under minus 4 का square plus minus 3 का square, that is 5 also. Second, third का mod of Z is equal to root under 0 का square, अब real नहीं है, 7 का square, so get 7. Mod of Z is equal to get 5. 5 का square. Clear है?
Now we need to know the properties of modulus function or properties. See, z is equal to x plus iota y. So conjugate, this is conjugate. z के ऊपर एक मैंने line segment. So z conjugate, that is x minus iota y. आपको y को minus y से replace करना होता conjugate के लिए. So now first thing is property is mod of z always greater than equal to 0. Mod always greater than equal to 0. Modulus function always greater than equal to 0. Or second is mod of z equal to conjugate का j mod equal to minus of mod of z equal to minus of conjugate का mod. सब इक्वल होगा राइट, क्योंकि हमें माइनस प्लस और फर्क नहीं पड़ेगा कि स्क्वायर है, इज इक्वल. आप कॉन्जुगेट का मॉड निकाले, आप जेड का मॉड निकाले, सेम ही होगा. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज mod of z1 z2 is equal to, you can write mod of z1 into mod of z2. Mod of z1 z2 is equal to, you can write mod z1 into mod z2. So we can in general, we can say in general z1 z2 z3 like that up to zn का mod, you can write mod of z1 mod of z2 like that up to mod of zn. So now fifth property is z1 by z2 mod whole mod z1 z2, we can write separately mod z1 by z2 mod, where z2 cannot equal to 0. z2 cannot equal to 0, z2 0 का तो undefined हो जाएगा. So now 6 point is z into conjugate का z into conjugate of z, that is mod of z का square basically. देखिए कैसे होगा. z आप क्या लिखेंगे, z आप x plus iota y, conjugate of z that is x minus iota y, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, z into z conjugate, get x square plus y square. x square y plus y square basically mod of z का स्क्वायर ही तो है. क्लियर है? So we can say z into conjugate z is equal to mod of z square. Now 7 point is z power n का mod, we can say mod of z power n. Now see proof of these things I can prove in like let z is equal to 1 plus iota. So now n is equal to 2. So it means आपको z का स्क्वायर फाइंड करना है. So it means 1 plus iota का स्क्वायर, that is 1 plus iota square plus 2 iota, that is 2 iota. So mod of z square is basically 2, and so mod of z is equal to root 2. So you can say mod of z square is equal to 2 is equal to basically z square. Clear? So we need to remember this. Now, eighth note point is a very important properties. Many questions asked on this property. Very important property. These are the very important properties.
Now see, properties number 8, Z1 plus Z2 mod square is equal to mod of Z1 square plus mod of Z2 square plus 2 times of real part of Z1 into Z2 conjugate. So Z1 plus Z2 का square is basically mod of Z1 square plus Z2 square plus 2 times real part of Z1 into conjugate of Z2. Or we can also write mod of Z1 square plus mod of Z2 square plus 2 times of real part of Z1 conjugate into Z2. Now, similarly, ninth point is Z1 minus Z2 mod square, that is modulus of I'd say modulus short form Z1 square plus Z2 square minus 2 times of real part of Z1 into Z2 conjugate. Or we can write mod of Z1 square plus mod of Z2 square minus 2 times of real part of Z1 conjugate into Z2. Clear? Sai, clear? Shai? Now, if you add these two equations, 10 point is if you add Z1 plus Z2 square plus mod of Z1 minus Z2 square, that is, these things cancel out. If you add these two equations, cancel out. So now it means 2 times of mod of Z1 square plus Z2 mod of Z2 square. So we need to remember this result. Mod of Z1 plus Z2 square plus mod of Z1 minus Z2 square, that is 2 times of mod of Z1 square plus Z2 square. प्रॉपर्टीज नंबर 8 प्रूफ कर दूं या आप लोग कर लेंगे? प्रॉपर्टीज नंबर 8 का मैं प्रूफ कर देता हूँ. सी हाउ इट कम. प्रूफ प्रॉपर्टी नंबर 8 सिमिलरली 9 भी सिमिलर ही होगा. प्रॉपर्टी नंबर 8 का प्रूफ mod of Z1 plus Z2 square, it means we can write Z1 plus Z2 into Z1 plus Z2 का conjugate. क्लियर है? जैसे आप अभी मैं बताया ना, Z into Z का conjugate is equal to basically mod of Z का square. So वही उसी प्रॉपर्टीज को मैंने यूज किया. देखिए प्रॉपर्टी जो मैंने बताया अभी इसके पहले, देखिए ये जो प्रॉपर्टी बताया ये उसी का यूज किया. सो नाउ मल्टीप्लाई कीजिए. सो Z1 इंटू, और देखिए जब आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, आप Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट आप ब्रेक कर सकते हैं. सो नाउ मल्टीप्लाई कीजिए Z1 इंटू Z1 conjugate plus Z1 into Z2 conjugate plus Z2 into Z1 conjugate plus Z2 into Z2 conjugate. Clear है? Now we know ना Z1 into Z1 conjugate is mod of Z1 square. Clear है? Similarly यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, mod of Z2 square plus, now take common Z1 Z2 आप ऐसे लिख लीजिए Z1 Z2 conjugate plus Z2 Z1 conjugate. यहाँ पे क्लियर है?
till now any doubt? Any doubt? No doubt. So now mod of Z1 square plus mod of Z2 square plus we can write Z1 into Z2 conjugate plus we can also write Z1 conjugate और Z2 को आप लिख सकते हैं Z2 conjugate फिर से conjugate. देखिए एक प्रॉपर्टी है कि आप conjugate के ऊपर conjugate कर देंगे तो फिर से Z आ जाएगा. इस चीज को याद रखिएगा. अगर आप Z का conjugate के ऊपर conjugate करेंगे तो JD होगा. Z का conjugate के ऊपर conjugate basically Z. So Z2 यहाँ पे है तो Z2 को आप लिख सकते हैं Z2 के conjugate के ऊपर conjugate. So now take we can say mod of Z1 square plus mod of Z2 square plus real part of Z1 into Z2 conjugate. Or also we can say similarly or can say write it out all properties clear है. ये सब प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना होगा. क्लियर है? एनी डाउट? आदिति, शाय, साई, एनी डाउट? Just scroll up, sir. Okay. No doubts, sir. Okay, good. So one question I'm giving. Sir, One. could you scroll up, sir? Okay. So the last property. 10 properties. Yeah. See, if you add 8 and 9 properties, LHS is Z1 plus Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 minus Z2. मैंने 8 and 9 को ऐड कर दिया बस. तो जब ऐड करेंगे तो आप देखिए 2 times real part of Z1 Z2 conjugate and यहाँ आपको है -2 times real part of Z1 Z2 conjugate. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? Z1 2 times of Z1 मल्टीप्लाई पूरा का देखिए 2 times. इससे देखिए आप मैं कर रहा हूँ फिर से क्लियर लिख के Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट का स्क्वायर क्या आया? मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 times ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 का कॉन्जुगेट. सिमिलरली Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर आया मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 times ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट. तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो यही प्रॉपर्टी 10 बन जाएगा. मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर दैट इज देखिए 2 times हो जाएगा ना और एक कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस. सो 2 times ऑफ मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर दोनों. क्लियर है समिता? Yes, sir. प्रॉपर्टी नंबर 10 क्लियर है? Yes, sir. Okay, now I am giving one question. Question is if 1 plus iota into 1 plus 2 iota into 1 plus 3 iota like that up to 1 plus n iota is equal to x plus iota y. सबको जो मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू x प्लस आयोटा y. नाउ आपको फाइंड करना है. दिस वेरी गुड क्वेश्चन. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बेसिकली मॉडुलस फंक्शन का ही है क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 into 5 into 10 into like that 1 plus n square is. आपको दिख गया होगा बेसिकली क्या हो रहा है. 2 बेसिकली क्या लिखा हुआ है आपको पता चल गया होगा. डू दैट.
मैं ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे देता हूँ, आप ऑप्शन बता दीजिएगा कौन सही है। ए ऑप्शन इज x plus y, B option is x square plus y square, C option is x square minus y square, D is x minus y. फटाक से बता दीजिए। टू आपको क्या दिख रहा है बताइए? 2 into 5, 5 बेसिकली किसका मॉड है? 1 + 2 आयोटा का 2 इज का स्क्वायर, बेसिकली 1 + आयोटा का मॉड √2 होगा, उसका स्क्वायर 2 होगा। 1 + 2 आयोटा, उसका मॉड √5 होगा, उसका स्क्वायर। आप समझ में आ गया होगा, आप बताइए। सविता, which option is correct? Shai, Sai, Aditi, you got the answer? Anyone? Aditi, are you doing? Shamita, देखिए बेसिकली 1 + iota, 1 + 2 iota, 1 + 3 iota, like that up to multiply or have 1 + n iota is equal to x plus iota y है। तो आपसे जो वैल्यू पूछा जा रहा है वो बेसिकली मॉड इमरी का मॉड का स्क्वायर है। तो पहले आप लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस फंक्शन बोथ साइड, मॉडुलस ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जब बोथ साइड मॉडुलस लेंगे तो प्रोडक्ट में तो आप इस तरह से लिखेंगे मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ 1 + आयोटा, मॉड ऑफ 1 + 2 आयोटा, मॉड इनटू मॉड ऑफ 1 + 3 आयोटा, इस तरह से अप टू 1 + n आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ x + आयोटा y। क्लियर है? तो जब इसका मॉड लेंगे 1 + आयोटा का तो √2 आएगा, इसका मॉड इंटू √5 आएगा, राइट, प्लस इंटू इसका मॉड √10, लाइक दैट, इंटू 1 + n का √1 + n स्क्वायर इज इक्वल टू इसका मॉड √x² + y स्क्वायर। अब हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है? 2 × 5 × 10, मतलब वी नीड टू स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। So we get 2 × 5 × 10 into like that 1 + n square is equal to x² + y square। तो ये तो आंसर हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी का वैल्यू फाइंड करना था ना। क्लियर है? एनी डाउट समिता? Sir, could you explain again? ओके, बेसिकली आपको 2 × 5 × 10 इंटू लाइक दैट अप टू 1 + n स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना था, राइट। तो अब देखिए, अगर मैं मॉड ले लूं बहुत साइड, मॉडुलस बहुत साइड फंक्शन ले लूं, सो बेसिकली 1 + आयोटा का मॉड क्या होगा? √2, 1 + 2 आयोटा का मॉड √5 इंटू 1 + √10। इसी तरह से अब 1 + n आयोटा का 1 + n स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू मॉडुलस, दोनों तरफ फंक्शन लिया तो मॉड ऑफ x प्लस मॉडुलस फंक्शन ऑफ x + आयोटा y का क्या होगा? √x² + y स्क्वायर। अब रूट में हमारा है और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? 2 × 5 × 10 × 1 +, सो वी नीड टू स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट। सो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको ये मिलेगा ना।
सो इसी का वैल्यू LHS का वैल्यू आपको पूछा गया, तो RHS क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है सविता? Yes, sir. एनी डाउट आदिति? आदिति एनी डाउट? शाही एनी डाउट? समझ में आ गया। ओके, सो इक्वालिटी अभी मैं क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इक्वालिटी ऑफ Z1 एंड Z1 Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे यदि इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d है, इट मीन्स कि a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d। इक्वालिटी ओनली पॉसिबल इज रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, दोनों इक्वल होना चाहिए एंड इट मीन्स बोथ। नाउ कॉन्जुगेट मतलब मैं बता दे रहा हूँ, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है बेसिकली आर्गुमेंट प्लेन में, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इट मींस कि z के ऊपर आप बार बार सिंबल देंगे, राइट? सो दैट इज इफ z इज x प्लस आयोटा दैट इज x माइनस आयोटा y आ जाएगा आपका, लेट q पॉइंट इसको x माइनस x कोमा माइनस y कोऑर्डिनेट में आप दिखाएंगे। तो बेसिकली conjugate is a image of z in mirror is x-axis c. This is like x-axis, that is real axis, like mirror, and this is a plate point p is the point that is z का इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y. So mirror image is q, that is x, minus y. क्लियर है? mirror image x axis के बाद only change is y coordinate, right? Plus to minor. So this is the q, basically z conjugate. So we can say image of z, this is the image of z with mirror क्या है, with respect to x-axis. So conjugate is basically mirror image of z with respect to x-axis. See the example. मैंने already discuss कर दिया है बस, z conjugate. Let 3 plus 4 iota is z, so z conjugate is 3 minus 4 iota. Let minus 3 minus 4 iota is z, so conjugate is minus 3 plus 4 iota. Now, 7 j, let 4 iota, so conjugate is minus 4 iota. 2 plus root 3 is equal to, इसका conjugate क्या होगा, 2 plus root 3, because this is a real partner, so real part का तो कोई changing नहीं होगा, 2 plus more conjugate is also 2 plus root 3. Clear है? Like 5 का conjugate also 5. So now properties about conjugate, discussing properties. Any doubt about the topic conjugate of complex number? I think this is an easy topic. Now properties. Let z is equal to x plus iota y. We know that z bar is x minus iota y. Now अब फिर से इसका आप जब conjugate लेंगे तो क्या हो जाएगा, x plus iota y. क्लियर है? x plus iota y, इट मींस आप बोल सकते हैं कि z, आपको याद रखना है कि z conjugate then conjugate is z. So now
This is your first property. This is now second property. मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. Z plus Z का conjugate, that is 2x. Clear है? Purely real. Or you can say 2 times of real part of Z. That is purely real. Now third is minus कर दीजिए. Z minus Z का conjugate, that is 2 iota y. Or you can say 2 times of imaginary part of 2 times of imaginary part of Z, or this is called purely imaginary. Note down, note point about Z, 0. Note for knowledge purpose, we can say 0 is purely real, or also, or we can say 0 is purely, 0 iota लिखेंगे तो 0 is purely imaginary, but we can't say, zero is imaginary. So 0, you can say 0 is purely real, or you can say 0 is 0 iota लिख देंगे तो आप purely imaginary, but we can't say 0 is pure imaginary. Clear है? So now I'm doing it out. One very good question. Question is, if mod of Z1 is equal to 1, mod of Z2 is equal to 2, mod of Z3 is equal to 3, mod of Z4 is equal to 4. Now, given is 16 times Z1, Z2, Z3 plus 9 times Z1, Z2, Z4 plus 4 times Z1, Z3, Z4 plus Z2, Z3, Z4 mod is equal to 48. Find the value, then find the value of 1 by Z1 plus 4 by Z2, Z1 conjugate, Z2 conjugate plus 9 by Z3 conjugate plus 16 by Z4 conjugate. इसकी वैल्यू फाइंड करना आपको दिया हुआ है. mod of Z1 is equal to 1, mod of Z2 is equal to 2, mod of Z3 is equal to 3, mod of Z4 is equal to 4, and also given is mod of 16 times Z1 Z3 plus 9 times Z1 Z2 Z4, 4 times Z1 Z3 Z4 and plus Z2 Z3 Z4 mod is equal to 48. Please everyone do that.
शमिता आर डूइंग, ट्राई कीजिए। Yes, sir. हाँ ट्राई। आप प्रॉपर्टीज का यूज कीजिए। पहले आप एलसीएम ले लीजिए, जिसका वैल्यू निकालना है उसका एलसीएम निकाल के आप फ्रैक्शन का एडिशन की तरह ट्रीट कीजिए। और जब आप एडिशन करेंगे ना, तो आपको जो 48 गिवन है 16 वो दिख जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4। We can say the answer in 30 seconds. Anyone got the answer? मैं ऑप्शन देता हूँ, आप ऑप्शन बताइएगा। A is 3, B is 2, C is 4, D is 16. Which option correct? Aditi, Samita, C। वन क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूँ। बेसिकली आपका इसका वैल्यू फाइंड करना है 1/Z1 कॉन्जुगेट प्लस 4/Z2 कॉन्जुगेट प्लस 9/Z3 कॉन्जुगेट प्लस 16/Z4 कॉन्जुगेट। नाउ एलसीएम क्या हो जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट, Z4 कॉन्जुगेट। नाउ जब आप Z1 से जोड़ करें, आप यहाँ से आ जाएगा Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 टू Z3 कॉन्जुगेट Z4 कॉन्जुगेट प्लस 4 टाइम्स Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट Z4 कॉन्जुगेट प्लस लिखिए Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट Z4 कॉन्जुगेट प्लस 4 टाइम्स Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट Z4 कॉन्जुगेट प्लस 9 टाइम्स Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z3 Z4 कॉन्जुगेट प्लस 16 टाइम्स Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट। क्लियर है? अपॉन मॉडुलस ऑफ Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट Z4। एलसीएम है, तो मैंने बताया कि आप ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, जैसे Z1 Z। तो आप बताइए, जो कॉन्जुगेट एंड विदाउट कॉन्जुगेट मॉड इज सेम, सो वी कैन राइट ना, इसका वैल्यू आप बता सकते हैं ना 48 ही होगा, लेकिन इसका वैल्यू गिवन है से। सो कॉन्जुगेट का मॉडल
without conjugate mod, same. So 48. Now we can write now mod of Z1 into mod of Z2 into mod of Z3 mod of Z4. Basically conjugate, but conjugate mod or without conjugate also mod is same. So now 48 upon mod of Z1 कितना given है? 1, 2, 3, 4. So mod of Z1 is equal to 1, Z2 is equal to 2, Z3 is equal to 4, 3 और Z4 is equal to 4. से यहाँ से आ जाएगा 2. So T is the correct answer. मतलब आप देखिए सिंपल वे में आप ऐसे कर दीजिए, इसका 48 गिवन है तो आप जब ये एलसीएम लेंगे तो 48 ऊपर आ जाएगा और Z1 Z2 Z3 का मोड क्या होगा? 24. So that is 48 by 24, that is 2 is the answer. क्लियर है? सेम तरह का क्वेश्चन मैं एक आप लोग के दे देता हूँ, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. If mod of Z1 is equal to 1, mod of Z2 is equal to 2, mod of Z3 is equal to 3, and 9 times mod of 9 times Z1 Z2 plus 4 times Z1 Z3 plus Z2 Z3 is equal to 12. Then आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है. Mod of Z1 plus Z2 plus Z3 is, ट्राई कीजिए. आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. Aditi, are you doing?
Aditi, Shamita, are you doing? Yes, sir. Do that. Sai, try to do. मैं हिंट दूं, आप 9Z1Z2 प्लस 4Z1Z3 प्लस Z2Z3 है, आप Z1Z2 Z3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए और Z1Z2 Z3 कॉमन है। अब आपको 9/Z3 दिखेगा प्लस 4/Z2 दिखेगा और 1/Z1 दिखेगा। अब देखिए Z1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, Z2 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ, Z3 इक्वल टू 3 दिया हुआ। बेसिकली स्क्वायर आपका आ रहा है ना ये, सो स्क्वायरिंग कीजिए और रिप्लेस कीजिए। Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, so you can write Z1 into Z1 conjugate is equal to 1, so we can write Z1 1/Z1 is basically conjugate of Z1. Similarly we can write Z2 into Z2 conjugate is equal to 4, so we can write Z4/Z2 is equal to Z2 conjugate। इससे इस तरह से कीजिए। मैं कर देता हूँ, आप तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए जे में। देखिए 9 times Z1 Z2 plus 4 times Z1 Z3 plus Z2 Z3। देखिए अब थोड़ा सा सोचिए, अगर आप Z1 Z2 Z3 कॉमन लेते हैं तो आपको यहां से मिलेगा 9/Z3 प्लस 4/Z2 प्लस 1/Z1। और नाउ आप सोचिए, आप इसको आप बेसिकली आपको इसका वैल्यू पूछा गया है, तो इट मीन्स कि आपको अभी तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, इसका भी कन्वर्ट करने का यही एक तरीका है। आप देखिए मॉड ऑफ Z1 दिया हुआ है 1, तो वी कैन राइट मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और वी कैन राइट Z1 इनटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 का मॉड Z1 इनटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1। अभी मैंने प्रॉपर्टी ये बताया था ना, तो नाउ वी कैन रिप्लेस 1/Z1 इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1। सिमिलरली गिवन है Z2 का मॉड इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग कीजिए तो Z मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, so now Z2 into Z2 conjugate is equal to 4, so Z2 conjugate basically 4/Z2। क्लियर है? सो मतलब आप रिप्लेस कर सकते हैं 4/Z2 को Z2 कॉन्जुगेट से, 1/Z1 को Z1 कॉन्जुगेट से। सिमिलरली Z3 कॉन्जुगेट को आप रिप्लेस कर सकते हैं 9/Z3 से, 9/Z3 को Z3 कॉन्जुगेट से। सो नाउ आप रिप्लेस कर दीजिए Z1 Z2 Z3 into Z3 conjugate plus Z2 conjugate plus Z1 conjugate का मॉड। अब ये बताया कि आप प्रोडक्ट में तो आप अलग अलग मॉड लगा सकते हैं, Z1 Z2 Z3 का मॉड लगा सकते हैं, आप इसका मॉड लगा सकते हैं Z3 conjugate plus Z2 conjugate plus Z1 conjugate का मॉड। अब आप इसका अलग अलग भी मॉड यूज कर कीजिएगा प्रोडक्ट में। एंड नाउ इतना इक्वल टू 12 गिवन है ना, इसका आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ऑल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 12। नाउ अब इसका आप Z1 का प्लस Z2 कॉन्जुगेट कर रहे हैं और सेम Z, तो Z1 इज इक्वल टू के मेरा 1, Z2 इक्वल टू 2 मॉड 4, और इसका आपका आ गया नो 2 गिव 3 गिवन है 3। Now you can write Z1 plus Z2 plus Z3 mod also equal to 12। So आ गया Z1 plus Z2 plus Z3 को mod is equal to 12/6, that is 2। So आप
मैं अपलोड कर दूंगा रिसोर्सेस में नोट्स। सो आप लोग इसको नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर्टीज वगैरह मैं आज अपलोड कर दूंगा। क्लियर है आदिति? सविता? यस सर। डाउट है? नहीं सर। साय? No, sir. No doubt, sir. ओके, प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? कि प्रॉपर्टी का यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए ये सारे प्रॉपर्टी यूज किया ना, ये जो मैंने डिस्कस किया प्रॉपर्टी, ये सारे यूज हुआ ये सब क्वेश्चन में, ये सब प्रॉपर्टी यूज हुआ, राइट? सो आपको ये सब प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, आप सवाल इजीली कर लेंगे। होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके बाद रीड कर देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन आपको बेसिकली लोकस बताना है। होमवर्क क्वेश्चन ऑफ जेड इफ रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस 1। आप इसका लोकस फाइंड कीजिएगा। होमवर्क क्वेश्चन है, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पेयर ऑफ क्या होगा आपको बताना है। Now I am ending the meeting. कैसे निकले आप लोग?